मेहमान आज विशेष दिन पर जुड़ रहे हैं। जीएसटी राहत से एसी की मांग में कितना इजाफा दिखेगा, ब्लू स्टार के मैनेजमेंट से हम खास बातचीत करेंगे। ब्लू स्टार के एमडी बी त्यागराजन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्यागराजन सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए, और सबसे पहले आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं, और इस जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बचत उत्सव की भी शुभकामनाएं। तो एयर कंडीशनर पे भी जीएसटी घटा है, और जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में जैसे ही छूट मिलती है, कस्टमर डिमांड में एक तरह का बूस्ट देखने को मिलता है। तो किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? Greetings to you as well as Kavita and your audience on the occasion of Navratri. It has commenced well. In fact, our team was awake from midnight onwards in order to test the system. It is doing extremely well. And the dealers, as you may recall, from August 15th onwards, have been taking bookings. Rightly, the consumers were told, please wait till 22nd, you will avail the benefit. And so there are enough bookings, and we have to wait and watch between now and September 30th. And beyond that, till Diwali, how the sale is going to be. Going by the bookings and going by the feedback from the dealers, I think September to September, 20% growth is possible. That's what we are estimating. And in a 10-day period, that will be a record sale. And the entire benefit is being passed on to the consumers. We'll have to wait and watch what the market operating prices are going to be. And we are working towards achieving that goal of at least 20% growth month on month. हेडलाइन दे दी आपने, तो सितंबर टू सितंबर 20% आप बता रहे हैं, और अगले 10 दिनों में आप कह रहे हैं कि बम्पर यहाँ पे रिकॉर्ड होगा बिक्री के लिहाज से। तो एडवांस में मुबारकबाद। और जब ये आंकड़े आपके पास आ जाएंगे तब आप वापस हमारे साथ शो में जुड़ेंगे और हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे कुछ कंसर्न्स इमीडिएट इफेक्ट को भी लेकर है, कुछ कह रहे हैं कि थर्ड फोर्थ क्वार्टर में हम इसका इम्पैक्ट होता हुआ देख रहे हैं। क्या किसी भी तरह का लैग इम्पैक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या इस तरह की स्थिति बन सकती है? Absolutely. There are multiple things out here. Number one is the pent-up demand due to poor summer sales because it rained during summer season. So when it rains, people only postpone their purchase. They do not drop the purchase. Now, in the festival season, they would have bought it. I'd always maintained, even though the summer season was a washout, 15% growth for the full financial year is possible. Now, I think 20 to 25% growth, despite a poor summer season, is indeed possible because the reduction is substantial in our category. This will be only next to automobiles. And this category is on the cusp of becoming a big category at homes. The penetration levels are expected to surge. So therefore, I would expect forensic activity from now on. There is one catch here. 1st January 2026, there is an energy label change. So therefore, the inventory planning has to be very sharper. We will have to measure on a daily basis what is the tertiary movement in the channels and begin to produce in such a manner we are able to grow at the same time, not stocked out. प्रशांत बात कर रहा हूं। एक चीज समझना चाहेंगे, मतलब दिवाली या फेस्टिविटीज जो होती हैं वो एक नई बिगनिंग के तौर पे भी देखा जाता है। हमें बताइए कि आगे क्या कुछ प्लानिंग कर रही है कंपनी, और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन हैं जहां पर लगातार कारोबार के लिहाज से आप लोग री इन्वेंट कर रहे हैं। So there will be multiple things. The very first thing is, see, back end, that also I must tell you, that if there is booking and they all have been waiting for more than a month, you have to deliver and install. You can imagine the logistics movement, installers must be trained to handle that additional load. In a festival season, it's a lean season for the air conditioner category, but it is going to be like summer. Activity at a high pitch that is supposed to happen. Second,
generally the consumer behavior is who wanted to buy one air conditioner for a bedroom may end up buying two. That will be another trend that we will see. The third one is who wanted to buy a 3-star air conditioner may end up buying a 5-star air conditioner. So therefore, the inventory planning, the ground level, what needs to be done, these are the immediate things. Now, going forward, the product has become affordable and the growth is going to be high, which means you will have to look at the production capacities. I'll be very optimistic about FY27. And what we would have thought we may wait for one more year, you may have to advance some capex in order to handle the load. राइट सर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और इतने अहम मौके पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, अब मुझे आपसे ये जानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा कहा कि आज से ही आत्मनिर्भर भारत का जो चैप्टर हमने शुरू किया है उसमें एक और कदम हमने आगे बढ़ा दिया है। सर, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आपके सेक्टर और आपकी कंपनी के लिहाज से मुझे समझना है, तो आपने क्या प्लान्स बनाकर रखे होंगे? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म कहेंगे हम। कैपेक्स से कंजम्पशन की कहानी को अब हम तवज्जो दे रहे हैं सर, और इसी कहानी पर जो है भारत भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिस तरह का उन्होंने सपना देखा है, अब इस कंजम्पशन को चर्न करके ग्राहकों को फायदा दिलाने की जो कहानी है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सेक्टर के लिहाज से, कंपनी के लिहाज से जरा हमें बताइएगा। He is absolutely right. In fact, way back in 2020, when he spoke to the CII National Council, while listing the products that should be made in India, air conditioners figured. We were surprised how the air conditioner is figuring in that list. But then the multiple things followed. There was a PLI scheme, AC industry benefited, and there were tariff, non-tariff barriers so that we stop importing. Today, all of us are manufacturing the finished goods here. The component ecosystem, huge investments have been made by multiple players. There is only one particular component which is yet to be indigenized, which is actually the compressors. Now, both the multinationals as well as Indian companies are looking at it. It's a question of around 18 months to 2 years before that component also is made in India. So air conditioner, if you look at today to 2028, you will fast see it's not only the air conditioner, every component that goes inside is also made in India. And we as a company are committed to make in India and also make for the world. And you are aware, for Europe or United States and other geographies, we have been pursuing a program to develop heat pumps and deliver. सर, आप जब भी आते हैं तो हमारे पास समय कम पड़ जाता है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते हैं। आज भी यही हुआ है, समय खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ और इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में आपने शिरकत की। धन्यवाद। Thank you. चलिए, इसी के साथ मुझे और प्रशांत